Hello everyone. In this slide and the slides that are coming ahead, we will read some things about realism, a major mainstream theory in international relations, and some of the major ideas, key features of realist doctrine, and the division in of realism, like classification in realism, like classical realism and then neo-realism or structural realism and neoclassical realism and further types of structural realism. And then finally, we will see something about the criticism of realist doctrine from both critical theory perspective and feminist perspective. So here in this slide, it's a introductory slide on IR. We'll see some of the major thinkers that are there in realist doctrine. So we'll begin with classical realists, Thucydides, who wrote the History of Peloponnesian War, armed conflict between Sparta and Athens. Then we have this Chinese scholar Sun Tzu, and then Kautilya, who wrote Arthashastra. He's from India. Machiavelli, who wrote The Prince. Hobbes, who wrote The Leviathan. All these thinkers, they consider politics as power. No? And it is after power that it is what the power is the only major thing that all states pursue. तो इन्होंने जो है एक तो जो ह्यूमन नेचर को बेसिकली अलग प्रकार से डिफाइन किया फॉर एग्जांपल इन थियोलॉजी और जितने भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स है विल सी ह्यूमन नेचर एज बेनेवलेंट ये वो बहुत ही जो है हम्बल और ओबीडियंट इस प्रकार से बताया गया है बट दीज स्कॉलर्स ऑन द अदर हैंड दे सी ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश क्रूअल ईर्ष्यालु झगड़ालू ब्रूटिश है ना इस प्रकार से जो है Then we see these 20th century classical realists इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया बस थोड़ा सा इसी जो फ्रेमवर्क था क्लासिकल रियलिस्ट्स का उन्होंने और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया एंड इनका जो पोजीशन था इट वाज basically against the idealist utopianism that was the prevalent thought of that time. मतलब after First World War there came many idealist scholars who said that by ordering these international institutions in a better framework, we can prevent war. So E.H. Carr and Morgenthau they argued कि नहीं भैया इस प्रकार से तो कुछ नहीं हो सकता. It is basically the human nature which is where the problem lies, and human nature is the determinant factor for why the states behave as they do. Then we see Robert Gilpin, Raymond Aron, and George Kennan, Henry Kissinger. All these are 20th century classical realists. Then Kenneth Waltz, who wrote this History of International Relations, and he is known as the father of neorealism or structural realism. He says that rather than human nature, which is for the classical realists, rather than human nature, it is the structure of the international system, that is anarchy, which is the prominent cause of why states behave as they do. Then we see further division in neorealism. Kenneth Walt's version is the one version. We see Joseph Greco later, who differentiate between relative and absolute gains, and then the third version is also known as security theory, where some of the new realists are a security maximizer. They say that states only amass as much power as is required by them in order to be secure. On the other hand, some offensive realists like John Mercimer, they say that the dominant trend in IR for a state is to become a hegemon. ठीक है, तो they are offensive realists. Then we see neoclassical realist scholars like Farid Zakaria and Randall Schweller. They are nearer to the classical doctrine and they bring back the unit level variation back into IR theory. Then there are some other types also like strategic realism of Thomas Schelling, which is
more policy oriented, and we read this from the foreign policy perspective. Then there are other streams also, like African Realism by Errol Henderson, then British School of Realism by Hedley Bull, Subaltern Realism by Muhammad Ayub, and Rational Choice Realism by Joseph Clicquot. सो जो है हम इससे आगे वाली ये जो स्लाइड है इसमें विल सी मेजर थिंकर्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये एक प्रकार से वर्ड एसोसिएशन समझ लो आप। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हेन द एग्जामिनर इज लेजी ही आस्क क्वेश्चंस लाइक दीज, है ना। ही कैन नॉट फ्रेम क्वेश्चंस लाइक इन, वो होते हैं ना सेंटेंस वाले क्वेश्चंस, एंड देन यू विल हैव टू पिक ए बी, बोथ ए एंड बी, ए बी सी। तो वो उसमें थोड़ा सा जोर आता है। मोस्टली जो आजकल के नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, दे आर ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड एसोसिएशन ओनली, so here it becomes even more helpful for you guys. For example, मॉर्गेनथाउ के बारे में जो भी वर्ड एसोसिएशन है, ही डिफाइंड पॉलिटिक्स एज पावर, ना। ही इज आल्सो नोन एज द पोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, and some other word associations like politics among nations, his book. And then there are other things also which are associated with Morgenthau. For example, Stanley Hoffman, he says that Morgenthau's realism is power monism, ना। पावर को ही only significant फैक्टर समझा जाता है। Then Graham Allison came with the concept of Thucydides trap, which we will see in the upcoming slides in more detail. Then there is the security dilemma by Wheeler and Booth. They say that increase in power or capability of state creates a dilemma in the minds of other states, who think whether these security preparations are for defensive purposes or for the offensive purposes. So it gives fuel to security dilemma. Then John Mercimer, a structural realist who is associated with offensive realism, who says that uh, it is in the part of a state's nature to become a hegemon, to amass as much power as it can. Then Errol Henderson is associated with African realism, as we saw in the last slide. Structural realism, Kenneth Waltz is known as the father of structural realism, or neorealism. He uses system theory in his analysis of international relations. Then Farid Zakaria is associated with neoclassical realism. Then Joseph Greco is associated with the concept of relative and absolute gains. Absolute gains मतलब कि a state is concerned with his own power and security. On the other hand, relative gains में ये होता है कि who is gaining more, है ना, उससे आप ज्यादा प्रभावित हो, ना कि आपके पास कितना है उससे। Then Barry Buzan is associated with the securitization theory. Absolute gains के बारे में लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट करते हैं, रिलेटिव gains के बाद में के बारे में नियो लिबरल्स बात करते हैं। Although neo liberals talk about both absolute and relative gains, they say that it is not only the absolute gains which are important for a state, but also relative gains. Then defensive realism, like Kenneth Walt's realism, it talks about security maximization, and offensive realism, like John Mercimer's realism, it talks about power maximization. Then we also have this term called deep structure, which is basically the synthesis of both neo-realism and neo-liberalism. Neoliberalism and neo-realism, they share some of the concepts, although they differ on much more. तो इसी को जो है आईआर में डीप स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। Then we see that Morgenthau again, he gave the the six concepts in international relations. So see this lady Jane Tickner, who is a feminist scholar in IR, ये she provided a feminist reformulation of the Morgenthau's six principles, है ना। उनको जो है feminist perspective से इसने बताने की पढ़ने की कोशिश की। Rosemary Grant, on the other hand, says that realism promotes patriarchy,
because the language, the vocabulary it uses, the military, the courage, all these virtues are basically associated with manly virtues. So in that way, realism promotes patriarchy. And again, ये जो मतलब मिलिटराइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन और सिक्योरिटी को भी बहुत संकीर्ण, केवल मिलिट्री सिक्योरिटी के सेंस में समझना, और है ना, इसी प्रकार से वॉर को, वो वॉर का जो फिनोमेना है उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, ऑल दीज आर जो है पेट्रियार्कल issues in nature. Then there is this another scholar whose name I have forgotten to write. He says that realism is ahistorical in nature. He basically is a Marxist scholar of international relations. Then we see Alexander Vand, who came up with the concept of cultures of anarchy. ये सब की सब चीजें जो है विल आगे आने वाली स्लाइड्स जो है उनमें हम डिटेल में इन सब के बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, इस स्लाइड में हम बात करेंगे सम ऑफ द मेजर वर्क्स इन रियलिस्ट डॉक्ट्रिन। देखो, अक्सर जो है आजकल के नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, दे आर बेसिकली द वर्ड एसोसिएशन क्वेश्चंस, एंड या फिर जो है मेजर वर्क्स के बारे में, या फिर मेजर वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लासिकल रियलिज्म की जहां तक बात है, कोटिल्य रोट अर्थशास्त्र, थुसिडाइरिस रोट्स द अकाउंट ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर व्हिच इज the history of armed conflict between Sparta and Athens. It also consists the Melian dialogue. Sun Tzu wrote the Art of War, Machiavelli wrote the Prince, and Hobbes wrote the Leviathan. 20th century classical realists, prominent among them are E.H. Carr and Hans Morgenthau. So Carr wrote the 20 Years Crisis, that is from 1990 to 39. अब ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर जो यूटोपियनिज्म है, लिबरल यूटोपियनिज्म, इट वाज द डोमिनेंट पर्सपेक्टिव, एंड दीज 20th सेंचुरी क्लासिकल रियलिस्ट्स केम इन अपोजिशन टू दिस लिबरल आइडियलिज्म। ठीक है, इसी तरीके से हंस मोर्गेनथाउ राइट्स द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो इसका प्रोमिनेंट मेजर वर्क है। ही आल्सो राइट्स 1946 में साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, and in 1951 in defense of the national interest, and in 1960s he wrote another book by the name The Purpose of American Politics. Then there comes structural realism. Structural realism जो है, it basically uh, came against both classical realism as well as liberal institutionalism. ठीक है, ये जो है liberal institutionalism and structural realism, these are contemporary trends in IR. और क्लासिकल रियलिज्म के अगेंस्ट में किस प्रकार से था, बिकॉज क्लासिकल रियलिस्ट थिंक दैट इट इज बेसिकली द ह्यूमन नेचर विच गेट्स रिफ्लेक्टेड इन अ स्टेट्स नेचर। ह्यूमन इगोइज्म, इन अदर वर्ड्स, डिटरमाइंस स्टेट इगोइज्म। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रियलिस्ट जो है, दे से दैट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम विच इज अनार्की। ये जो अनार्किक स्ट्रक्चर है, इट इज द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ व्हाई स्टेट्स बिहेव एज दे डू इन आईआर। तो केनेथ वोल्ट जो है, विद द पब्लिकेशन ऑफ 1979 थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये इसके साथ ही स्ट्रक्चरल रियलिज्म की शुरुआत होती है। ही आल्सो रोट अनदर बुक इन 1959, मैन द स्टेट एंड द वॉर, जिनके बारे में हम और डिटेल में जब न्यू रियलिज्म की बात करेंगे उस टाइम बात करेंगे। Then this John Mershimer, he is also a structural realist and also an offensive realist. He writes 1990 में Back to the Future, 2001 में The Tragedy of Great Power Politics, ये इसका फेमस किताब है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। Then in 2007 he writes The Israel Lobby with Stephen Walt, and 2007 में US Foreign Policy। फिर एक और ट्रेंड आता है रियलिस्ट डॉक्ट्रिन में, विच इज नियो क्लासिकल रियलिज्म, और इसका जो प्रोमिनेंट स्कॉलर है वो है फरीद जकारिया। ही राइट्स द बुक इन 1998 फ्रॉम वेल्थ टू पावर। फरीद जकारिया इज आल्सो नोन बाय द नोशन इलिबरल डेमोक्रेसी, ना, कि किस प्रकार से जो है इवन आफ्टर द इलेक्शंस एंड ब्ला 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 डेमोक्रेसी में कंटेन इलिबरल एलिमेंट्स। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं है, पर
मेजर बुक्स है उनको क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज करके पढ़ सकते हो। बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड एसोसिएशन बुक्स का जो है क्रोनोलॉजिकली, और कौन सी बुक्स जो है कौन से ऑथर ने लिखी है। इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।